हाय एवरीवन, वेलकम। और अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हो तो सीरियसली अच्छा कि आप आ गए। दिस इज़ हाउस ऑफ लिटरेचर, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग इन इंग्लिश लिटरेचर। Whether you are a BA student, MA student, UPSC optional student with English literature, UGC NET, सबका काम एक ही जगह होगा. My name is Kanak, and for the next few minutes I want to tell you exactly what this channel is and who it is for and why. If you are an English literature student, you genuinely cannot afford to miss that. तो बिना time waste किए let's get into it. ओके, सो रियल टॉक, कितने लोग हैं यहाँ जो इंग्लिश लिटरेचर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं? लाइक समवन सेज कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ लो एंड योर ब्रेन जस्ट गोज बफरिंग, और वर्स योर प्रोफेसर सेज एनालाइज द पोस्ट कॉलोनियल सब टेक्स्ट एंड यू आर सिटिंग देयर लाइक सर मुझे तो ये टेक्स्ट ही नहीं समझ में आ रहा, सब टेक्स्ट कहाँ से लाऊं? दैट्स एग्जैक्टली वाई दिस चैनल एग्जिस्ट. हियर what you'll get brief ऑथर सेंट्रिक इंसाइट्स जो सिर्फ एक्चुअली मैटर करते हैं वो, एंड नो फ्लफ. क्लियर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स आइडियाज, सिंपल लैंग्वेज, सीधे पॉइंट पे आएंगे ना. लिटरेरी थ्योरी इन प्लेन लैंग्वेज, यस इवन डेरिडा एंड इवन फोको. हम डरेंगे नहीं. एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग, बिकॉज नोइंग द कंटेंट इज ओनली हाफ द बैटल. लिखना भी तो आना चाहिए. टेक्स्ट एंड पोएट्री एनालिसिस, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप. कोई भी पोएम या पैसेज ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं रहेगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस. एंड द बेस्ट पार्ट, one channel for BA, MA, UGC NET, UPSC optional. You don't need to jump between 10 different sources anymore. Here you will get each and every bit of it. Now you must be thinking, why subscribe? I know what some of you might be thinking, भाई ये YouTube पे तो बहुत सारे channels है, ये अलग क्या है? Fair question. Let me be very straight with you. We are building from old English all the way to postmodernism, structured, chronological, connected. We are learning authors beyond memorization, their life, their time, their ideas, and why it is still matters today. We are turning what feels like confusing dense literature into something that actually makes sense, like a story. Because honestly, it is a story. Everything is a story, and this story is, let me tell you, बहुत लंबी, बहुत interesting story this is going to be. And structured notes and summaries, yes, those two. आपकी सारी notes बनाने की ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ेगी. We have got your back. Now our literary journey. Okay, this is my favorite part, so let me tell you the plan. Think of English literature as one long epic road trip, and we are going together with snacks, good music, zero traffic, hopefully zero traffic. So the first stop would be classical old and middle English literature. We start in a very beginning. Homer, Virgil, Aristotle, and then Chaucer walks in, and English literature gets its very first real voice. ये वही फाउंडेशन है जिसके ऊपर सब कुछ बना हुआ है. Next stop will be Renaissance and Elizabethan literature, Shakespeare, Marlowe, Donny, Spencer. यहाँ लिटरेचर ने अपनी आइडेंटिटी फाइंड की, एंड यस, वी विल मेक शेक्सपियर मेक सेंस. दैट्स अ प्रॉमिस. द ब्लू कर्टन्स अराउंड द वॉल्स will make more sense. Now stop 3, neoclassical literature, Pope, Swift, Johnson, Defoe. These writers loved reason, order, and honestly roasting society. Swift के ऐसे पढ़ोगे तो समझोगे यार ये बंदा तो सेविज था. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, विच इज़ रोमांटिक एंड विक्टोरियन लिटरेचर. वर्ड्सवर्थ, कीट्स, डिकन्स, ऑस्टन, हार्डी. फीलिंग आ गई, नेचर आ गई, social drama आ गया. Victorian literature is basically 19th century Netflix series full of twists and moral dilemmas. Top 5, modern and contemporary literature. T.S. Eliot, Virginia Woolf, Orwell and Rushdie. ये वो writers हैं जिनकी दुनिया तुमसे सबसे ज़्यादा मिलती जुलती है, and this is where things gets really interesting. From Homer to Rushdie, that's our journey, one video at a time. So now you must be thinking how to get most from this channel. Alright, before I let you go, here are 5 quick tips to get the most out of this channel. Tip 1, watch videos in playlist order. The syllabus is chronological. अगर बीच से शुरू करोगे तो context miss हो जाएगा. Start from the top. Tip 2, build strong concepts with
text analysis. Don't just passively watch, pause, think, apply. समझना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं चलेगा. Tip 3. Don't be scared of complex texts. Every difficult poem, every confusing novel, we will break it down together. That's literally what we are here for. Tip 4. Attempt the Q&A at the end of each video before checking the answers. एग्जाम में कोई हिंट नहीं देगा, प्रैक्टिस करो, स्ट्रगल करो, फिर चेक करो. That's how it sticks. Work on integration, critical thinking, and answer writing together. That's my tip number 5, because this is especially for UPSC and UGC net aspirants. How you write matters just as much as you know. Simple rules, big difference. Follow these and I promise you will see the results. Alright, that's a wrap on the introduction. Our next video is already on its way. History of English Literature, a complete chronological timeline. Beginning ho ya revision kar rahe ho, that video is going to be genuinely useful for everyone. One small request before you go: if this seems like something that would help you or someone you know who is studying English literature, वो आपका भाई बहन हो सकता है, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, please subscribe करें, hit like and share this channel with them. It takes just 2 seconds and it helps more than you know. And don't forget, join us on our Telegram channel for free notes. Link is in description. Thank you till we meet in the very next video. Bye bye.